she told a story about how her husband passed away and she's taking care of her in-laws. But you don't know if that's true or not. So ये भी चीज उन्होंने एक बहुत वाइडर एक बहुत बड़ी चीज दिखा दी है कि somebody is accepting their unmarried. hello everyone, welcome back to Dramalog. This is Sunny, and I have Haneza here with me all the way from Saudi Arabia. So Haneza is going places. 2 weeks ago, or 2 months ago, Yes, she was yes. in Pakistan, and now she is in Al Khobar. Is that how you Yes, pronounce it? Al Khobar? yeah, October, Yeah. yes. How's the new Um, place treating you? it's too hot summer everywhere. It's too hot. Actually, back there in Karachi as well. But now the weather is quite good in Karachi. Like it's a lot of rain and stuff like that, and weather is quite good. But here it's too hot. Mm. So But yeah, you it are goes like that. originally from, you've lived in Saudi before, right? So this is your Yeah, yeah, I second have been. Yeah, term. I have been here. So I know that this kind of climate is here in June and July. So I'm quite aware of this, Yeah, to be very yeah. honest. Okay. So Al Khobar, is that where you lived before, or this is a new place? Yeah, I have been here. I lived here for quite some time, and it was a very nice place overall. It was the first place where the crude oil came out, and as I'm like a polymer and petrochemical engineer, I have studied a lot about that and Oh, visited ISRA. It was very interesting for me, by the way. ah, So it was so crazy, like visiting Aramco's first place where the crude oil came out and the way they have preserved their whole legacy. It was so worth, like visiting. And apart from that, there is a Cornish belt which is quite very famous here, and it's one oh, of is the it? favorite spot of people. Yes, it's one of the favorite spot of people. Oh, So yeah, it goes oh, like this. okay. Yes. Oh, wonderful. Oh, I'm so happy for you. Thank you. Thank you. Okay, so I know you're strapped for time, so let's not delay the review. Yeah, We'll yeah. get started. Sure, So sure. today we are going to review Dastak again, right? So we haven't reviewed it in a while. It's been like 2, 3 weeks that we haven't reviewed. We've been loving this Yeah, show, so I thought, like, now that Haneza is settled and a few episodes have gone by, let's yeah. revisit Dastak and share our take on it. So, Last Haneza, you time, want to get I started on think Dastak? around 21st May, we covered the episode 30. So it has been quite a long time. Oh, So yeah. oh, yes, yes. Yeah, we're almost at episode 38 or 39, almost 40, right? I think today was episode 40. I haven't seen the whole thing today. Me- And so we'll be reviewing till episode Yeah. 38 or 39. Yes, yes, Okay. exactly. Yeah. So when I don't know when after I think the last time we spoke, maybe the Fiza Khala was already introduced, or was she introduced a little later than that? I don't We remember, introduced. but we have a Yeah. new entry in. We have a new character, Okay. yeah, we have a character of Fizza Khala that was introduced around in episode 32 to 33. So this is one of the new character. Mm. Otherwise, yeah, otherwise we have Mm. same a character of Saif. Then we have character of Momina, which was Sadaf, I guess, if I'm not wrong. That was her name. Faryal. Yeah. And Yeah. Faryal. yeah, Faryal. Faryal. Sorry, yes, sorry, Yes. that was So Faryal. Fiza Khala is And a then new entrant. yeah, yeah. Pizza Khala is the new entrance. And it seems like that she is very close to Moise's mom and dad. And when she heard about Moise's mom's ailment, she flew down from Canada to take care of her sister. And she has been Yeah, apprised of Moise's wedding and everything beforehand by Moise's dad. And Moise's dad has sort of like started plotting with her to get Kiran out of Moise's life, as well as Shani. So we all know how anti Moise's dad is about Kiran yeah, and Shani, and the whole game plan he has is to get these two out of Moise's life and get Moise married to somebody else and of his liking. yeah, And yeah, he yeah, and without his wife's knowledge, he's got Fiza Kala on board to this whole thing, and he's kind of like already made her toxic against
Kiran, and so she comes in and she immediately starts like plotting, sort of plotting against Kiran. So she doesn't. We see that she doesn't like Kiran at all. She's got a Yeah. preconceived notion about Kiran. Although she's not a bad person herself, because she's very philanthropic, etc. Based on what Actually, it story was she like, shared. yeah, actually, in episode around 35 or 36, when the uncle of Kiran and then Fiza Khala get to Hmm. know each other, there she told that due to having Yes. no kids and stuff like that, she was very, she became rude herself. She was like, initially, she's not that kind of a person, but time and things turned out, some kind of bad things in her, or evil things, evil feelings in her. Otherwise, she used to help her in-laws, family of in-laws. She used to support them. So I guess that Hmm. they have shown a Yeah. very right perspective here, that a person can't be positive all the time. Throughout their life, there is a very positive character, Hmm. can't be negative all the time. There is a transition of emotions. So that's what's shown in Fiza Khala's character, that she's very negative with Kiran, but yet she is very positive with her uncle, that she doesn't know that Yeah. it's Kiran's uncle. Yeah, Yeah. and in her defense, or you can say that she listened to what Moise's dad shared, and it was a and it was very much against something, a narrative Yes. against Kiran. So she already Yes. had this preconceived notion about Kiran, and she was in no way willing to give her a True. chance, sort of. Yeah. So Yeah. um, I was actually questioning whether this was even needed. Did we need somebody like Fiza Kala at this point in the story at all? I don't know Actually, the where they're going with it. story was going quite quite fine till now. It was very quality Yeah. substance. Yes. But Yes. with the entry of Fiza Khala, it becomes too dragging. Like she Yeah. has dragged the whole scenario a lot. That's what I felt Yes, it's on. dragging, is unnecessarily more Yeah. toxic than it needs to be. And we have Yes. this love story of Fizakala and Kiran's uncle, which I think is completely Exactly. unnecessary. It I don't was know where it's yeah. going with that. Right, and we're already at episode 39. I mean, it's obvious Yeah. that they have introduced these Even characters now, now to people are drive the saying that story. please just get it done with this, and please just let's Yes, wind yes, it up. People want closure yes. of these characters. I know, Yeah. and me too. I mean, I was really thoroughly enjoying Dastak because of the direction, the story, Yeah. the performance. But now it's like, wow, it's becoming a very, a day-to-day drama soap. Like kind of a Uh, story with Fiza Khala and Fiza Khala's background and um, her uncle and etc. And then I can foresee that Kiran will be against this alliance between Fiza Khala and her hmm. uncle, given her uh, experience with Visa Kala. And so yes. that will be the complication going forward. But you're drifting away from the crux of the problem, right? The Yeah. crux was Yeah. this custody issue and a young child involved in it. Yes. So Yes. For the yeah. viewers that has just like joined us, मैं उन लोगों को पर्सनली ये चीज़ कि हमने जो प्लॉट पहले डिस्कस किया था बिफोर 30 एपिसोड, इट वेंट लाइक के देयर इज़ अ कैरेक्टर ऑफ किरण, और किरण जो है वो एक ऐसी खातून को इन्होंने दिखाया है जो कि बहुत ज़्यादा लाइक उनको एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के रोल में दिखाया है, कि द Hmm. वे शी केम Yeah. आउट द टॉक्सिक मैरिज एंड द वे शी स्टूड अप फॉर हर Hmm. किड। उसके बाद फिर जो जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं, उसमें कौन जी. कितना सपोर्टिव रहा है। लाइक मुइज वॉज समबडी जो कि उनको यूनिवर्सिटी से जानता था, दैट्स वाई ही जस्ट Hmm. स्टूड अप एंड सपोर्टेड हर। और अपार्ट फ्रॉम Right. दैट एक Right. चीज जो, हाँ, जो कि जो अभी व्यूअर्स जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हम उनको ये चीज जो है वो ये थोड़ा सा एक स्नीक पीक दे सकते हैं पिछला, कि जो है वो Hmm. थोड़ी बहुत चीजें हैं जो इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल एंड एपिसोड में, लाइक एपिसोड 33, 34, 35 में एक कैरेक्टर जो है किरण खाला का, उसके जरिए उन्होंने चेंज किया है थोड़ा सा डायनामिक्स पूरे ड्रामे का। इवेंचुअली एक जो Hmm. मेन टॉपिक था उसका वो यही था कि हाउ द स्प्लिट ऑफ पेरेंट्स वो किस तरह से इफेक्ट करता है ओवरऑल बच्चे को। फैमिली को। हाँ। जब, हाँ, जब पेरेंट्स हाँ। स्प्लिट होते हैं, वो चीज किस Right. तरह से वो किस तरह से हर रिलेशन का किस पे क्या इफेक्ट होता है। लेकिन वो कहानी Right. बिल्कुल उससे डाइवर्ट हो गई जब ये फिजा खाला का कैरेक्टर Hmm. आया, तो हाँ। कहानी बिल्कुल उससे हट गई। जी।
Exactly. And like Mojo element tha, where they were supposed to take Shani to the to the court to meet the judge, and the judge was Hmm. supposed to ask Shani, whom would you want like to stay with, your mom or your dad? Hmm. I felt like they should have invested a lot more time there, answering Shani's Yes. innocent Yes. questions, trying Yes. to navigate that very difficult scenario where the son is trying to grapple with the idea of like, who is this new True. dad in my life now, and what I'm supposed, जी. what emotion am I supposed to feel towards him, right? And So they another did thing, not एक बड़ी spend a lot of time around it. या और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जब हमने किरण को देखा है शानी को ट्रीट करते हुए, या तो वो ये कह रही है शानी जल्दी से खाना खा लो, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, हाँ, जल्दी सो से स्कूल जाओ, चले जाओ। सो हमने कोई जाओ। बॉन्ड देखा ही यस। नहीं कि वो बॉन्ड वो हाँ, कैसे पैच अप करती है इन बिटवीन हाँ। मोइज एंड शानी, वो कैसे डील करती है, क्या उसको प्रॉब्लम्स आती है, ये चीज तो वो उन्होंने दिखाई नहीं। I mean, exactly, especially when you're going for this, milestone kind of a meeting यस। where कोर्ट में लेके जा रहे हो बच्चे को, उसको पूछना जी। पड़े, जी। पूछोगे तुम बाबा या माँ एंड ऑल दिस, वहां पे एक बच्चे के दिमाग में जो चल रही है, एंड माँ के, दे शो लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी किरण की, बट वो जो लाइक the bonding they will try to develop, or be with Shani most of the time. I thought that before Kiran got married and moved to this house, she spent a lot more time with Shani, or at least she was more protective of Shani than she's now. अभी वो तो यस। हमेशा छोड़ के चली जाती है हर कहीं ना कहीं, कभी हम्म। वो फिजा खला के हम्म। पास छोड़ के चली जाती है, कभी वो अपने मदर इन लॉ के पास छोड़ के चली जाती है। हम्म। मदर इन लॉ सो कॉम्प्रोमाइज कि वो बोल बोल रहे हैं लोग कि लाइक वो दवा लेके सो जाती है, सो उसके पास हाँ। हाउ कैन यू लीव योर किड? नहीं So नहीं नहीं, it's a बट bizarre, लेटर it's like, उन्होंने, नहीं लेटर उन्होंने ये भी दिखाया है कि कोई नैनी या कुछ सम हेल्पर होती हैं और वो उनके साथ फुटबॉल भी खेल रही होती हैं, राइट, इन एपिसोड 34 और 35। हाँ, तो मे बी वो कुछ उनकी हाउस हेल्प भी है जो कि उसको मतलब को उसको वो करती है, लुक आफ्टर करती है। लेकिन जो मेजर चीज उन्होंने यहाँ पर जो हम्म, दिखानी चाहिए थी वो ये थी कि किस तरह से किरण बैलेंस करती है इन बिटवीन मोइज एंड शानी, जो कि आई फाउंड इट कि वो मिसिंग है, दिखाना था उनको ये चीज। बहुत मिसिंग है, very जी। much missing. The very fact या। that they move into a new house with somebody, with a grandpa like that, who's very much against the existence of this guy, यस। of this kid. उसको तुम अकेले रूम में सोने देते हो, अकेले ही छोड़ देते हो. It was very हाँ। bizarre. Like, this is not इवन the, इवन not the Kiran आई फेल्ट इन we एपिसोड are थर्टी used टू ना, to. वहाँ जो वलीमे पे भी जो डिस्कशन हो रही थी, वो एकदम से शानी चला जाता है और सैफ जो है वो बाहर उसको Hmm. मिलने आता है अपने बेटे को। अब उसमें Hmm. एक चीज मुझे ये मिसिंग लगी कि क्यों पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं था शानी इन सब चीजों के लिए। इतनी डिस्कशन माँ और बेटे के दरमियान उस वक्त क्यों नहीं दिखाई उन्होंने ऑन स्क्रीन? तो कुछ ऐसा बॉन्डिंग डिस्कशन कुछ ऐसी नहीं दिखाई कि वो अभी बहुत छोटा है, वो हाँ, अभी बहुत छोटा है, आई डोंट नो मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ, हाँ. उन्होंने कुछ अजीब सा सिनेरियो बिल्डअप किया जो कि मुझे नहीं समझ आया। Huh, very good point. And I felt the same. I felt like they did not address the questions in that innocent child's mind very या। appropriately. It was like, अभी भी उसको कुछ तो make believe story ही बोले जा रहे हो, like, it's not like a sit down, we need to talk kind of या। thing, या। which Western world में बहुत होता है. Western world में when in reality होती है. I've seen my kids, my not my kids, my friends' kids, when they are going through a similar situation, counselors are involved. यहाँ पे तो like it's like इतना कुछ हो रहा है उस बच्चे के साथ, and there's nobody there to counsel him, or nobody spending अच्छा, time इवन with him. इवन उन्होंने अच्छा ओके, आई आई वुड से कि मदर ट्राई टू इग्नोर दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन ना पेरेंट्स, क्योंकि वो खुद एक सिचुएशन में होते हैं, व्हाट आई फेल्ट। Hmm. लेकिन तो Hmm. फिर कोई उनका रिलेटिव, कोई नानी खाला, हाँ, इट्स शोन के उसकी एक बहन भी है, नोबडी हैज हाँ, एवर हाँ, हाँ. स्टेप कि भाई नेक्स्ट अभी तो नेक्स्ट वीक। they're not, yeah, they're nowhere in Shani's life now. He was so जी। close to his khala and his grandma, like from maternal grandma. अभी तो वो लोग कहीं भी नहीं दिखाई देते. किरण भी कभी भी जी। उस शानी को लेके उनके घर नहीं छोड़ता. Especially when Shani is हाँ। troubled like this, वो नहीं करता. You heard from Shani's teacher कि Shani is struggling in school. उसके बाद भी कोई, we don't see her have any dialogue with Moise or anybody. So या। it's like स्टोरी पे अभी ग्रिप नहीं है. स्टोरी कुछ और ही बहुत कुछ ट्रू। करना चाह रहा है, which is
which is मतलब not आई relevant to थिंक जो the राइटर है core. ना, सरबत नज़ीर जो राइटर है, शी इज क्वाइट, जो मुझे लगता है कि जो उन्होंने स्टार्ट लिया था ना स्टोरी का, इट वाज सो यू हाँ नो सो एंगेजिंग, कि लग रहा था कि भाई ये कोई बड़ी मास्टरपीस चीज है। और बहुत हाई हाँ होप्स हो गई थी, ऑडियंस वर लाइक, मतलब हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज को बहुत फील कर रहे थे, बड़ा डे टू डे लाइफ का टॉपिक है, समवेयर एंड हाँ अदर 5 पेरेंट्स में से कोई एक तो ये फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज जी मुझे लगा जी राइटर वाज वेरी वाइज। लेकिन जब वो उन्होंने हाँ आके अननेसेसरी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए, और मजे की बात ये, वो डायरेक्शन भी सही नहीं है। चले कैरेक्टर्स आपने इंट्रोड्यूस करा दिए, लेकिन वो डायरेक्शन भी अच्छा समझ नहीं आ रही है कि वो आए तो वो आए कैसे, वो चीज फ्यूज इनफ्यूज ही नहीं हो रही है उस सिस्टम में। वो हाँ चीज एंड है ना। वो इट्स सो अनकैरेक्टरिस्टिक के Kiran's या mama ji, who is such an astute person, very wise person, is not married all या his so for so long in his life because he simply didn't like anybody. यहाँ पे एक बैग नो एक्सचेंज में ही तुम इस बंदी को इतना पसंद कर लिया और उसका एक स्टोरी सुन के यू जस्ट लाइक्ड हर नो सो नो, मच दैट यू लेकिन एक बात है, प्रपोज्ड. व्हेन ना ना तो सनी मैम, मुइज की और उनकी डिस्कशन दिखाई है इन्होंने एपिसोड 33 में, किरण की और मुइज की डिस्कशन। तो उसमें उन्होंने हम्म. ये दिखाया है कि वो ये कहते हैं कि मुइज वाज आस्किंग कि उन्होंने क्यों नहीं शादी की, एंड ऑन दैट किरण सेड कि इसलिए नहीं की बिकॉज ही यूज्ड टू लाइक समबडी एंड देन शी वाज नो मोर और समथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी ही स्टोरी या उन्होंने हाँ हाँ बहुत छोटा सा या स्नीक पीक दिया, जो कि बिल्कुल इतना राइट अप्रोप्रिएट नहीं था कि हम उनके कैरेक्टर को अच्छी तरीके से वो कर पाते, इट वाज जस्ट लाइक अ वन राइट डायलॉग। हाँ तो वी डोंट नो या कि बिहाइंड द बैक क्या चीज थी। हाँ हाँ। राइट राइट एग्जैक्टली. फिर इस लड़की में तुमने और लड़की तो नहीं बोलूंगी इस वुमन में व्हाट डिड यू जस्ट सी. ही शी टोल्ड अ स्टोरी अबाउट हाउ हर हस्बैंड passed away and she's taking care of her in-laws, but you don't know if that's true or not. So या just a few meetings and you propose, you go to the extent of proposing to this woman, so which is, and this woman also accepting him, like without knowing who is, what his background is, anything एग्जैक्टली about him. एग्जैक्टly, इट Very वाज टू। uncharacteristic of या the, या ट्रू very ट्रू। unrelatable, very uncharacteristic. Usually, like अच्छा अच्छा, people in this ओके age ओके, वी अंडरस्टैंड। don't jump. अगर हम राइटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो समटाइम्स वो मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए ऐसा करते हैं कि वो कैरेक्टर का पूरा बैकग्राउंड तो एकदम से नहीं डिस्प्ले करते। लेकिन ठीक Hmm. है, लेकिन आप आफ्टर सर्टेन Hmm. एपिसोड आप ये तो दिखाएं कि वो कैसे बिल्डअप हो रहा है, वो सेंस कैसे, कोई सेंस नहीं बन रहा उस कैरेक्टर का उस वक्त ना, तो आप उसका हाँ बैकग्राउंड तो बता एग्जैक्ट दें बिल्ड कि अप वो क्यों दिखाओ. इंट्रोड्यूस हुआ। जी जी। हाँ एग्जैक्ट एग्जैक्टली। क्यों इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड मुझे सो ये जो नैरेटिव अभी चल रही है ये completely यूजलेस नैरेटिव है and it is not, जी it is out of character with the rest of the, with how the show has been, that this is not the way the author initially wrote the show or the director was initially directing the show. It's completely, now it looks like a regular soap. Not Dastak that या we are used to love. हाँ Another या। thing I have is like, yeah, yes, Moise's mom is sick, and of course she has her own baggages right now. But हम्म nonetheless, she's never effective enough in her protests. I feel, with whether it's with हम्म her sister, whether it's with her husband, she never हम्म। puts forward a very stern and decisive. Moise mom could have been a little bit more assertive and could have been a little bit more like, ऐसे क्यों कर रहे हो, नहीं मुझे तो ठीक ही लगती है. इतना is not enough. You have to be more या assertive as a mother-in-law, and you can see, hey there, you can see कि like people are against your daughter-in-law, and it doesn't take a lot to understand that. So but उसकी जो effort रहती है ना वो मुझे बहुत half-hearted सी लगती है. I agree that she has her हम्म own baggages. She's very sick right now. She knows that she's हम्म gonna die potentially, but फिर भी हम्म। उसकी effort as a woman बहुत half-hearted सी लगती है. Which लेकिन given the अच्छा, fact that she's अगर a social worker आई थिंक नहीं होना ये चाहिए. चीज इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है ये भी चीज इन्होंने एक बहुत वाइडर, एक बहुत बड़ी चीज दिखा दी है कि somebody is accepting their unmarried son to get married to a like divorcee। मुझे लगता है ये भी चीज इन्होंने Hmm. बहुत एक्सेप्टेबल दिखा दी है, विच इज क्वाइट अनएक्सेप्टेबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन येट एट द सेम टाइम मुझे लगता है उनकी कैरेक्टर की सबसे पॉजिटिव चीज यही है कि शी एक्सेप्टेड इट। उसके अलावा उनका कोई एफर्ट या वो ना, इट्स
वो फिर भी इतनी वो नहीं है, जो इन्होंने एक्सेप्टेंस हाँ दिखाई है ये बहुत अनरियल है। ये एक्सेप्टेंस होती नहीं है नॉर्मली। हाँ लाइक हाँ पर यहाँ पे तो दैट वाज सो मच अगेंस्ट के the wife had to be in favor and plus I think she had an ulterior motive that she wanted to see her son in front and she was या shown to be a social worker. If she's an honest या social worker दैट्स then obviously दैट्स she's अच्छा, उन्होंने थोड़ा लॉजिकली ये भी दिखा दिया कि शी वाज ऑलरेडी इनटू द सोशल वर्क एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के लिए वो ये yes करती थी। तो वो चीज सही हाँ रिफ्लेक्ट की है, हम ये कह सकते हैं कि ये हाँ सही है, मतलब इट नॉट हैपेंस हाँ बट यूजुअली, वो लेकिन उनके केस में सही लग रहा है। हाँ पर देन उसकी जो लाइक एफर्ट रहती है ना जब उसके सामने किरण को कोई ये टॉन्ट मार रहा है या फिर उसके सामने बच्चे को कुछ खराब कर रहा है शी डजंट पुट अप अ वेरी असर्टिव you know हाँ, defense against it like being the शी इज mother in नॉट the दैट family वोकल। हाँ, शी इज नॉट she's not वोकल। that vocal she doesn't put up a very assertive defense and neither to her own sister nor to her husband so like एंड it's सेम very इज द केस it's not a very good character या एंड सेम इज द केस विद मुइज एज वेल। मुझे लगता है एट सम पॉइंट जहाँ मुइज को भी हाँ बोलना चाहिए वो बिल्कुल चुप हो जाते। क्या हो रहा है हाँ इन हाँ द लास्ट 2-3 एपिसोड, मुझे समझ नहीं आ रहा, जहाँ पे बोलना है असल में डायलॉग्स डिलीवरी जहाँ पे करनी है, डायलॉग्स आने हैं, सीन बनना है, वो बनता ही नहीं है, वो चुप हो जाता है। चुप हो तो जाता है या ये दैट्स ट्रू ये भी हो रहा है ये रिसेंटली हो रहा है इसके पहले एवरीथिंग वाज गोइंग as expected right and with मतलब your इन एपिसोड expectations were met इन इन एपिसोड 35-34 आई वॉज वेटिंग कि कहाँ मुइज रिटेलिएशन हाँ शो करता है अगेंस्ट हिज ओन फादर। हाँ कहीं भी ही नेवर हम्म रिटेलिएटेड इवन वंस कि भाई मुंह से ही कुछ बोल दे, लेकिन नेवर। हाँ क्या करें। और बहुत ही लाइक हाफ हार्टेड सी एफर्ट रहती है लाइक उसके डैड या जब डांट देते हैं बच्चे बच्चे को लाइक हम्म सबकी एफर्ट बहुत हाफ हार्टेड सी रहती है टू सपोर्ट किरण एंड द किड हाँ। तो और ये तो आई मीन मुझे तो आई डोंट किरण नो की भी हाफ हार्टेड लग रही है जब वो हाँ शानी को अभी तो वो भी हाफ बीट हार्टेड हो कर। गई वो सच में प्रेग्नेंट लग रही है कि लेकिन आई एम इन माय ओन वर्ल्ड ये डूइंग माय ओन थिंग ट्रू ट्रू। हाँ यस यस तो अभी मुझे भी लग रहा है कि इट्स टाइम फॉर दस्तक टू रैप अप ये एक्सटेंशन ऑफ द या स्टोरीज की कोई मतलब नहीं बनती बिकॉज ये ना इट वाज अ वेरी मॉडर्न नैरेटिव before this now it's becoming a very traditional narrative and I'm ट्रेडिशनल not वन। liking ट्रू that at all so ट्रू yeah ट्रू। लेकिन yeah अभी जो रिसेंटली एक थोड़ा सा ट्विस्ट आया है कि शी वेंट टू सैफ हाउस एंड देन शी क्लेम्ड कि भाई इफ यू आर गोना मीट शानी लाइक दिस आई एम नेवर गोना लेट यू मीट विद हिम। तो वो वाली चीज जो उन्होंने अभी दिखाई है कि भाई फाइनली आफ्टर 6-7 एपिसोड्स उनको होश आ गया कि भाई आई हैव टू स्टैंड अप समवेयर। तो वो वाली चीज चले, फिर भी ये है कि मे बी इट्स सम काइंड ऑफ अ, hmm. हो सकता है कि कोई ट्विस्ट एंड टर्न ऐसा हो जो कि क्लोजर की तरफ ही लेके जा रहा हो, मे बी। हाँ हाँ हो सकता है या उधर सैफ इज प्लॉटिंग टू किडनैप शानी एंड टेक हिम ऑल द वे टू कनाडा ये कैसे फिजिबल सा आइडिया है मेरे को समझ नहीं आई उसका वीसा लेकिन कैसे कराएगा उसका विदाउट द मुझे मॉम्स मुझे नहीं लग कंसेंट रहा ऐसा पॉसिबल है, लीगली इट्स नॉट पॉसिबल। आई मीन अनटिल अनलेस यू हैव आई लाइक डोंट अ थिंक लीगली इट्स कस्टडी, पॉसिबल लाइक इट्स नॉट पॉसिबल हाँ लीगली। कस्टडी चाहिए तुमको you have to get his passport to begin with and then ये सब क्या यस। how are you even plotting this thing like that is like या ये बहुत या ही unintelligent unnatural सा दिखाया मुझे तो लग रहा है ऐसा लग रहा है तो इसलिए मुझे अभी लेकिन ना लेकिन अच्छा I'm पता losing है, my interest in Dastak a little bit सनी मैम, आई थिंक इन्होंने एक और ये चीज दिखाई है कि सैफ इज सो कंफ्यूज इन हिमसेल्फ कि अभी ही इज अनेबल टू डिसाइड एनीथिंग कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। अदरवाइज उसको कोई ना कोई प्लानिंग तो हाँ करते हुए दिखाते हैं ना, अभी तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया कि वो कुछ चॉक डाउन कर रहा है, प्लान कर रहा है और समथिंग लाइक दैट। एवरीथिंग नहीं इज they do show him like in applying for Canadian immigration stuff like उसने फरियाल से भी अपना passport लिया ये वो so there was a conversation going on with paperwork going on so वो हुआ बट but व्हाट in अबाउट this whole फरियाल thing एंड व्हाट अबाउट हर ओन फरियाल मदर। yeah हाँ so he tells them that कि we are all going to move to Canada so we'll start with mom you go first and then Faryal and me will go and he doesn't mention Shani yet but No, no, but Faryal is skeptical he that said is one what is in thing. his I mind remember he said one thing so कि किसी न किसी को तो भूलना पड़ेगा।
व्हाट ही सेड, किसी ना किसी को तो भूलना पड़ेगा। अब वो कौन एक बंदा है जिसको भूलना हाँ. पड़ेगा, दैट्स अ मिस्ट्री। यस। He means Kiran. He means because his plan is to, because he goes and proposes this to Moises' dad. Okay, like मैं kidnap करने वाला हूँ and you support me. And he this time he says कि like नहीं मैं इतना far नहीं जाऊँगा. This is too much. This is I'm going getting into a territory that I don't want to get into. But you know then but the plan is कि like he will kidnap the little child and take him all the way to Canada, all the way away from the mother. But you know, how is this even legally possible? It's not that you're going from Karachi या to Islamabad. It's like it's just या Canada. या I इट्स, don't, I don't understand. अच्छा अगर ये But बात है कि कोई इंटर सिटीज होती जहाँ पे ले जाना चाह रहे होते या कुछ, तो चलो इट मेक्स सेंस, बट राइट यू आर लाइक ओवर, yes, यू आर ट्राइंग टू टेक अ किड ओवरसीज, which takes itself a yes, little bit, working and everything behind the back, yes, and without her own mother, उसके सारे legal documents सब कुछ तो उसकी mother के पास ही होंगे, आपके पास से कुछ है नहीं, तो फिर how you can show yeah. this to the audience How are without we any, planning to do that? yeah, It's just yeah, it's just bizarre. And but yeah, okay, so the other thing we see is like women themselves can be detrimental to other women. So because of their selfishness. So here, यहाँ पे Saif का अम्मी, she has been selfish from day one, and in her selfishness, she is like even in on board with all this abduction theories of her own son. yeah, So and she's constantly pushing him कि हाँ करो करो. She's not even thinking twice yeah, about कि yeah, बच्चे के ऊपर क्या होगा, बच्चे का क्या होगा. yeah, Like he's yeah, used to his mother, yeah, so as a mother she can't even think through कि like कि उसकी how will he survive without his mother whom she has been true. there in his life all along. So I Yeah. guess And ऐसा then होता है like maybe, but I think 60-70% ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ होता भी है, because all sort of people are there, तो कह सकते हैं कि ठीक है, it's close to reality, sometimes it happen like this as well, yeah, तो ये है। probably. अच्छा, I want हाँ. to highlight Shamoon Abbasi's character, by the way. His acting was अच्छा. हाँ. literally outstanding, मतलब वो जो monster uncle कहता है हाँ. ना शानी, वो literally हमें Yes. monster uncle लग रहे Yes. होते हैं। Moises' dad, right? Yeah, yeah, yeah. So I Yes. found it Yes. really interesting. वो वाली चीज के अच्छा वो लग रहा है कि he's monster, और like his aura, his face, everything goes like that character. तो वो मुझे एक बहुत अच्छी, मतलब it is Huh. well His casted. body वो कहते language towards the south, towards the kid is obviously he hates him to his yeah, gut, and you can see that. yeah, Whereas with his wife, he's so protective and so loving. So the same person can have this dual personality sort, right? So yeah, it's yeah. and he's done a phenomenal job. I अच्छा, know some of the reviewers have expressed a criticism about the way he looks in the sense that his styling, but I'm like, why not? Why can't a dad be like cool looking like this? Like he can be cool looking like this as well, yeah. right? So Nowadays there is a yeah. concept of Santoor mommy na. He's Santoor dad, I guess. What was that? I don't know about that. What is it? Santur dad? I've seen a meme. Actually, I have seen a meme somewhere that nowadays mummies are more like daughter, like the way they look and the way they present themselves. It's like they are kids themselves. So on that, in that context. I see. So yeah, Okay. All right. So yeah. that was a good. Anything A lot else, of people were Aneza? saying, yeah, one thing. A lot of people were saying that why Marina Khan is not now telling in her own review show, which is Kya Baat Hai, कि why you're dragging this drama? Why are you not reviewing your own drama? I was like, yeah, that's a quite interesting point. So I guess there is a message for her as well, that please review your drama as well. Like why is it dragging too much? Yeah, do answer the question. I know you can't review it, but you can answer that question for Because they pull sure. leg of lot Yeah, of good people, by point. the way. They pull leg of lot of writers and directors, to be very honest, in their show. Why not, why not with And your own? right, yes, yes. Yeah, K drama, क्या drama है, right? That क्या show. drama They है, should sorry, they yeah, yeah, should that yes. show. All right. So that was the review of Dastak, the story so far.
and we will come back again and with a new review. So far, I think this is it. We've covered all the points that we wanted to cover. So I'll see you again. Bye bye for now. Bye. Take care.